ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायिने कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थसुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नवमतिरप्यहैतुकी। आप सभी का स्वागत है। We welcome all of you to today's Bhagavad Gita class. हम अध्ययन कर रहे हैं We are studying का 5वां श्लोक। 6th chapter, verse number 5. भगवान ने In the previous verse, लक्षण बताए Bhagavan had explained the किसको कहते हैं, जिसको योग में symptoms of Yoga Rudh, क्या लक्षण है। one who has perfected in yoga. What is इस श्लोक में his symptom? कि In this verse, योगा रूढ़ he explains क्या करना है, what one has to do in order to प्रक्रिया है, ascend on the path of yoga, और to come on the Yoga Rudh stage. बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है This verse and the next verse both are extremely important कि हमारा because here we understand है ये कितना महत्वपूर्ण है, how important is this human form of life, और किस प्रकार से हम इस जीवन को सफल बना सकते हैं, how we can हम अपना make this life successful by understanding उसके लिए भगवान कहते हैं उद्धरेत आत्मना the purpose of life. आत्मानम अवसादेत आत्मैव ही आत्मनो बंधु
आत्मैव विपुरात्मा। तो बड़ा विचित्र श्लोक है। श्लोक में 7 बार भगवान ने आत्मा शब्द का प्रयोग किया है। ऐसा कोई So श्लोक it's a very strange verse. Bhagavan has used the word Atma जितनी 7 times. There is no verse where one word is repeated so many times. So he says the self is to be uplifted through the mind and never to be degraded, कि मन ही आत्मा का मित्र है। because the mind is indeed the friend of the self as well as its enemy. तो संस्कृत में आत्मा So in Sanskrit, शब्द का अर्थ होता Atma word has multiple meanings. है हमारी जो अंतरात्मा जो हम स्वयं हैं, The Atma, as it is what we are, the conscious से उसको particle, the Angsha of Bhagavan, को भी आत्मा that is called Atma. In Sanskrit, body is also called Atma, mind, intelligence, determination, परमात्मा को भी आत्मा कहते हैं। and even Paramatma is also referred to as Atma. इसलिए यहाँ That is why इसका अर्थ ऐसे भी कर सकते हैं कि हमें अपने we can also take the meaning that we should uplift ourselves by ourselves and not allow ourselves to be degraded. अपने ही अपने मित्र हैं। And we are our own friend and we are our own enemy. We can say like that. But if you speak like that, it will sound confusing that when you say ourself or myself, who is that? शब्द का अर्थ यहाँ That's why here one meaning of Atma is mind, and in the other case, it is Atma itself. तो ये So, सुविधा this facility धार कर that we uplift ourselves, शरीर में ही हमको प्राप्त है। this is only available in the human body. शरीर में In any other form of body, there is no facility to uplift oneself. ये बहुत बड़ा वैशिष्ट So, this is a great इस मनुष्य जीवन speciality of this human form of life that we have received, के पशु पक्षी हैं because the other animals, birds, जिस प्रकार से पैदा होते हैं, जिस the way they are born and the swabhava, the nature with which they are born, they live with that nature only and they die with that. में वो कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। They cannot bring any transformation or change in their life. उनका गुण धर्म शरीर के अनुसार होता है। Whatever qualities they have acquired through the body, their food habits, their method of reproduction, everything just continues like that, what they have acquired from birth. They do not have any facility to understand what is life, what is the purpose of life, how can we remain happy, why is this world created. की शक्ति उनमें They do not have the capacity to deliberate on these topics because their mind is not developed. Their mind is शरीर का योग working only to the extent it thinks only that how can I maintain my body, और उसमें भी कोई परिवर्तन and in that also they cannot bring any change. अनुकूल है। Whichever type of food is favorable for their body as designed by the material nature, के पास में they eat that only. But human being has this facility. Human being can eat anything. Human being can do anything. वो अपने आप को समझ सकता है, विद्या प्राप्त कर सकता है। Human can हम एक दूसरे से understand himself or herself, acquire education, communicate with other fellow human beings, express his or her thoughts, feelings, can acquire knowledge, can transfer knowledge. की उन्नति हुई है, And this is why human society has developed. बनाता है। Because when one person creates something or researches into something, then सुधार कर सकते the next generation can refine that, can develop it further. हैं, तकनीकी है। The modern science and technology that we have today, it has developed gradually. वैज्ञानिक कुछ विचारधारा लाता है, कुछ अनुसंधान First, some scientist does some research, then later scientists they develop that further. But animal society doesn't have any such facility. पहले 20,000, 50,000, लाखों वर्ष पहले जैसे वो Even thousands and lakhs of years ago, whichever way animals were living, they are living like that now also. But if you see human जीवन विकास society, then so much development has happened. If you see the theory of
evolution of human beings. They say that earlier human beings were living as hunters, living on animal meat. इसलिए आया क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान प्राप्त करने की So why this change has happened? It has happened because we have the capacity to acquire knowledge and to transfer knowledge, because we have language and we can communicate through language. So here Bhagavan is saying that whatever facility we have received, what is the purpose of that facility? भिन्न प्रकार की जीवन Is it शैली बिताएं is it meant just to live a lifestyle different from animals? मरने के बाद But what will happen after death? It will, the situation will be same. दोबारा से पशु भी बन सकते हैं And after death, we can even degrade to कहते हैं animal body. आत्मना आत्मानम That's why Bhagavan says here अपने मन से that अपना उद्धार कीजिए we should uplift ourselves through the mind. And uplifting means उन्होंने बताया था what he said in the previous verse. योगारूढ़स्तदोच्यते कि किस प्रकार से Uplifting means ascending to the perfection stage of yoga. आप अपना This is the yoga rudra stage. On this stage, और यही वास्तव में we can perfect our life. उद्देश्य And this is actually the purpose of life. भगवान श्री कृष्ण भी ये बात उद्धव को कहते हैं Bhagavan Sri Krishna is telling this to Uddhava. सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतैरितम पुमान न तरेत स आत्महा कहते हैं कि ये जो मनुष्य का जीवन है So he says बहुत दुर्लभ है that this human form of life is extremely rare. कहते हैं कि 44 According to Shastra, it is said that there are 84 lakh species of मनुष्य life, and human form is one of them, although it is said that there are 4 lakh types of human species. But the point is, it is not easy to get this human body. Even devatas, देवता लोग भी अपना they also सकते हैं long to get this body, because even in their devata body they cannot liberate themselves. को कभी मनुष्य जीवन That's why they also long for this human form of life so that they can perfect their life. So this body is extremely rare. में तो मिला हुआ है But even though it is so rare, at least now we have received it. तो प्राप्त ही है We have already received it. We don't have to do anything to get it. सुलभम सुदुर्लभम सुदुर्लभ होते हुए भी हमको ये प्राप्त है तो ये बड़ा But even though it is so rare, still we have this. So this is our great fortune और that we have received this human form of life. प्लवम सुकल्पम बहुत सुंदर So it is said this human body is compared to a very nicely designed boat, because we have hands, legs, we can stand up and walk. There is no other animal or bird who can stand upright, straight. Their bodies are all curved. हम अगर कोई परेशानी हो तो अपने उसको निवारण कर सकते हैं If we have some problem, we can find a solution to that. होती है उसका हम आदर नहीं करते हैं Whatever we get easily, we do not respect that. हमें कि एक व्यक्ति In Mahabharata, से दुखी there is a story that one person, he was frustrated with his life and he wanted to commit suicide, आत्महत्या क्यों and he encountered a wolf, and the wolf asked, why are you so upset? He said that I want to commit suicide, I am frustrated. The wolf said, you have got a human body. कि हमारे हाथ नहीं है मेरे शरीर में अगर एक कहीं कांटा लग जाए तो मैं The wolf said that I do not have hands. If a thorn enters my body, how can I remove that? उगा लेते हैं उसको You people, if you have some itching on your body, you can itch and get rid of that. But if we have itch or there is a thorn, how can we remove that? How can we eat food without hands? से जो करते हैं उसमें चातुर्मास्य करने में एक विधि है कि आप भोजन In Chaturmasya, there is a vidhi, a process of eating food without using hands. There is this one of the vidhis in Chaturmasya. Without using hands, you have to eat food. Once I had also tried this, to do this for one day. तो सामने खाना रख के ऐसे मुंह से खाया मैंने So I had tried that, eating food without using hands.
उठना पड़ा, within 2 minutes I started developing getting back pain, and you have to always you have to bend down to eat. भोजन खाने Imagine you don't have hands, it will be so difficult to even to eat food, और कितनी समस्याएं हैं। and then you will have so many other problems. You have to go to the washroom, you don't have hands. Imagine so much problem. तो अभी हमें जो सुविधा उपलब्ध है तो So whatever facility we have now, we don't think about that also. व्यर्थ की चीजों में अपना समय, We just waste time in insignificant topics. चाहिए क्योंकि ये सुविधा हमको So Bhagavan says that we should uplift ourselves because now we have this facility संसार of human body. को सागर बोलते हैं, भव सागर। This is a very wonderful boat. पार जाना This material world is compared to a great ocean, गुरु कर्ण धारम, और गुरु भी उपलब्ध and we have received this very nice boat की नाव का। to cross over that ocean, and Guru is the captain of the boat or the ship who can तो आपकी help us cross this ocean, की तरह and Bhagavan is the wind. नभस्वते ऋतम मया। तो इन्होंने, भगवान ने हमको गीता बोल के अपना ज्ञान दिया है, ये So by speaking Gita, के माध्यम से हम Bhagavan has given us his knowledge. This Gita is the wind मनुष्य जीवन through which we can cross this ocean of material existence. That is why human form of life is extremely important, and we have very limited time in our life, and we should derive maximum advantage of this time, and we should not waste time, because once this time goes away, it will not come back. समय एक बार You may do whatever you like. तो ये स्वतंत्रता The time that is gone forever. हमें उपलब्ध है। So we have this facility to degrade ourselves or upgrade ourselves. अपना उद्धार भी कर सकते हैं, So we can remain in the same position, we can go up or we can go down. लेकिन ऐसा होता नहीं है कि कोई मनुष्य अपना जन्म But it does not happen that a human being is neither upgrading himself nor degrading himself. नीचे तो गिरेगा, If somebody is not upgrading himself or herself, जो भी हो that person will definitely degrade, उससे उसका बंधन होगा। because whatever karma he is doing, कहते हैं कि अगर आप भोजन भी it will lead him to bondage. Bhagavan says that even if you are cooking for yourself, that is also sinful, because according to Shastra, every person is born देव ऋण ऋषि, indebted to rishis, to forefathers, etc. अपना उद्धार करना, So if that person does not try to clear that debt उससे उसका पतन होगा। and uplift himself, then he will definitely get degraded. उद्धार नहीं करेंगे तो नीचे अपने आप ही चले जाएंगे। So if we are not striving to uplift ourselves, we will automatically fall down. प्रयत्न करना पड़ता You don't have to work hard to fall down. You have to work hard to uplift to yourself. है। आत्मना, That's why Bhagavan says, और ये ऊपर गिरना नीचे उठना, ऊपर उठना नीचे गिरना, ये मन से होता this going up, going down, all this happens by mind. है, उपयोग करते हैं। How we use our mind. तो पहली बात तो हमें ये समझनी है कि So the first point that we have to understand is that if we want to uplift ourselves by the mind, then first of all we have to understand that we are not the mind. मैं मन नहीं, At least we should understand this much. लेकिन अभी हम ये जानते हैं लेकिन उस पर हम कार्य नहीं करते हैं। मन में कुछ होता है, So currently we know this, but we don't work on that. मन में चिंता हुई तो बोलते हैं मेरे चिंता है, मेरे को बहुत चिंता है। If our mind is in anxiety, we say I am having anxiety. So you are having anxiety or your mind is having anxiety. If you say that I am sad, आपके अंदर है, मन के अंदर। so the sadness is within you or within the mind. तो आत्मा तो न दुखी होता है न सुखी होता है। आत्मा को तो कोई Atma is neither happy nor sad. Atma does not have any anxiety. से अपना उद्धार Atma is free from all this. कि मैं मन नहीं हूँ। So if I have to uplift myself through the mind, first of all I have to understand that I am not the mind. को समझकर So if I can just understand this much and work accordingly, then my upliftment will happen. मन ही अपना, जो मन में भी जो भी
प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि जो भी सुख So, दुख का अनुभव whatever होता है is happening in the mind, the feeling of happiness or misery, वो मन में आते हैं, whatever feelings we have, they all से come मिला in the रहता है। mind. तो फिर मैं ही कहता हूँ And then I consider myself as the mind, and then I say I am happy, I am sad, I am आप तो anxious. है नहीं वो, But you are neither happy nor sad nor anxious. जाएगा ना। तो ये तो सब In the मन में previous chapter, Bhagavan had explained this. All these feelings are in the mind. भी कहते हैं इच्छा द्वेष In the 13th chapter of Gita, also Bhagavan says, इति क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। तो ये सब इच्छा द्वेष ये तो सब मन के गुण हैं। all this desire, hatred, all these feelings are in the mind. Are not in the Atma. So, first of all, we have to deliberate seriously on this point. स्मृति में रखना है कि मैं मन And we have to remain aware about this point that I am not the mind, मेरे में नहीं हो। and whatever is happening in the mind is not happening in me. I am different from this mind. करना है अपने आप को उठाने के लिए। And then I have to use the mind to uplift myself. बुरा भला हम जो कार्य करते हैं Whatever good and bad deeds को मिलता है we perform, we reap reactions of those deeds. कि जो मैं कार्य कर Udaredatmanam means this only, that whatever I do, I receive the result of that action. So we have to do something and understand that I am not the body, I am not the mind, and this body and mind don't belong to me also. Because if they would have belonged to me, they would have always remained with me. अगर मेरा ही है मेरे साथ चलता तो ये छोड़ना पड़ता है मेरे को। At death, I have to leave the body. मेरे लिए भी It will not go with me. That means it does not belong to me, and it is also not for me. नहीं होता If actually the body would have been meant for me, क्यों करता then why would body give me anxiety, give me suffering? कितनी परेशानी देता है। तो ये हम Currently, the body gives us so much trouble. So we have received this body for a small period of time, उपयोग करें and it is wise to use it in the best possible way, कि जो इस मन का intelligently. शरीर का मन Otherwise, Bhagavan says, सारे अर्थ कर सकते हैं, शरीर भी है बुद्धि भी है। here you can take many meanings of the word Atma. So what Bhagavan wants to say is that सदुपयोग करके you use your mind, intelligence and body properly to cross over this material ocean. प्रश्न हो सकता है कि भगवान आत्मा शब्द का That's why Bhagavan used the word Atma. Why did Bhagavan not use the word mind or mana instead of Atma? शरीर रह जाएगा। So if he would have used the word mana, then body and intelligence would not have been included in this point. That's why he uses the word Atma, so that body, mind and intelligence, all three अर्थ आ जाते हैं, are used to uplift the Atma. इसलिए उनका All three get included in the meaning of the word Atma. जैसे अगर मेरे को भूख लगी है तो मेरे को ही भोजन करना पड़ेगा। So if I am hungry, I also have to eat food. कोई It is not that I can employ some servant मेरे को भूख लगी and tell that तो आप चाहे कितने ही अमीर आदमी हो you eat on my behalf because I don't have time. So no matter how rich you are, you have to eat food. मेरा सेक्रेटरी सो जाएगा, If you feel sleepy, then you have to sleep. Your secretary cannot sleep on your behalf. अगर मेरे को भक्ति Similarly, है मुक्ति if I have to acquire bhakti or mukti, then I have to work hard for that. पैसे से खरीद लूं। You cannot purchase mukti or bhakti with money. कि कोई कुंडलिनी Sometimes it happens that गुरु था वो 1 लाख रुपया लेता था कुंडली जागृत करने का। people 1 लाख रुपया दो try to awaken Kundalini. There was some guru earlier who used to charge rupees 1 lakh for awakening Kundalini Shakti. So spirituality cannot be purchased with money. Actually, spirituality has absolutely zero connection with money. तो सब जितने भी अमीर लोग हैं सब If it would have been possible to purchase spirituality with money, then all the rich people would have पड़ेगी। become spiritualists. शरीर जो है So that does not happen. For spiritual life, we have to perform sadhana, and body is the instrument for performing sadhana. है नहीं, The body has been given to us for that reason only.
This human body is designed only for sadhana. It has no other purpose. भगवान यहाँ पर बता This is what we have to understand here, and this is what Bhagavan is trying to teach here. गीता के And for that, you don't have to do anything much. Gita simply says that you should give up your attachment. That's what he said in the previous verse. संकल्प सन्यासी योगारूढ़ सदस्य कि जो सब संकल्पों का त्याग कर देता है That one who gives up the sankalpas, को योगी भवति कश्चन। तो जब तक संकल्प का त्याग नहीं करेंगे unless you give up the sankalpa, ये आपको करना, लेकिन उसमें आसक्ति मत रखिए। you can continue doing what you are doing, but don't be attached to that. कार्यम कर्म करोति ऐसे सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चक्रिय। तो यहाँ कार्य करने की कला So here, हमको समझाते हैं Bhagavan is teaching the art of working, ताकि how we should work, so that में बंधन में ना पड़े। we do not get implicated in the bondage. इसलिए वो कहते हैं कि ना आत्मानम This is why he says, माने जिसको डिप्रेशन बोलते हैं ना, इसी को संस्कृत में अवसाद बोलते हैं, विषाद अवसाद। तो अवसाद का मतलब कि अपनी आत्मा को avasad is depression. तो गिराने का मतलब क्या है? आत्मा का गिराना और उठाना क्या है? आत्मा तो गिर So don't become depressed. Now the question is, what is there to uplift or degrade the Atma? के बंधन से Atma is not like that having some weight. So the point is that not allowing it to become bound by this karma. मन से आसक्ति मत कीजिए। So do not become attached by the mind. संकल्प होता है Sankalpa happens in mind only. और उसी से बंधन। Attachment happens in mind only. And that is what leads to bondage. आत्मा इधर। So here he says तो ये कहते हैं कि जो हमारा बंधु है वो ही हमारा शत्रु है। that which is my friend is also my enemy. In this world also we see that बंधु मानते हैं those whom we consider as our friends, जी, हमारे बहन, हमारे पुत्र पुत्री, जो बंधु बांधव हैं, उन्हीं से शत्रुता भी होती है। our different relations with whom we have friendship, they only become our enemy also, मन से होता है, or we consider them as our enemy. So all this happens in the mind. उसी से हमारी शत्रुता होती है। वो यहाँ तो भगवान कहते हैं कि वास्तव में वो ही शत्रु है और कोई शत्रु वत्रु नहीं है। Actually, Bhagavan is telling that is the only enemy. Mind is the only enemy, and there is no other enemy. Our actual enemy is the mind only. अगर हम अपने मन पे नियंत्रण रखें If we can keep the mind under control, तो शत्रु कोई रहे है नहीं, then there is no other enemy. वो हमारा Actual enemy मन है। is the mind only. क्योंकि जो बाहर का शत्रु है उससे तो हम सावधान हो जाएंगे कि ये मेरा शत्रु है। The external enemy, we can become careful of that. But we do not become careful of this enemy of the mind, that which is seated within योग कर रहा है, and is attacking us with various weapons, is cheating us. मन में आते हैं Because sankalpa happens in the mind, के लिए फिर हम कार्य करते हैं। and then we work for that sankalpa, तो कहते हैं जो दुख and we suffer. Who is enemy? Enemy is that which inflicts suffering upon us. बोलते हैं ना, Friend is that which gives us happiness. दुख देता है तो उसको शत्रु तो नहीं बोलते ना। One who makes us happy, we do not call him enemy. And तो ये मन ही है। one who gives suffering, we do not call him friend. So this mind is the cause of happiness and suffering, and especially the cause of suffering, मिलता नहीं है, because we do not get much happiness in life. दुख ही मिलता है। Mostly we get suffering only. 11वें स्कंद में भागवत In the 11th canto of Srimad Bhagavatam, there is a Bhikshu Geet. तो उस भिक्षु गीत में उन्होंने ये In the Bhikshu Geet, it is said, क्या है, what is the cause of our suffering? सोचते हैं कि So mostly we think अपने पति के कारण दुखी हूँ या पत्नी के कारण that I am suffering due to my husband or wife or some other relative, में कार्य करते हैं or if I am working in some office, then my boss, because of my boss, I am suffering. के कारण मैं दुखी हूँ। I am suffering because of some other person,
or somebody says कोई that गृहस्थ it is my bad luck, or my शनि दशा भी planetary साधु को चल positions रही are है, उसके unfavorable, कारण में दुख है, or the सैटर्न Shani प्लैनेट Dasha is going on. तो कोई कहता है कि नहीं मेरा समय खराब है, काल So somebody काल ही says सब कुछ that करता है। time तो does वहां पर वो everything, भिक्षु अपने so गीत I में am going कहते हैं, through a नायम bad मनो time. में सुख दुख हेतु देवता आत्मा गृह So in कर्म Bhikshu कारक Gita it is said, मनो परम कारणम आमनंति संसार चक्रम परिवर्तयेदि। कहता है कि ये ना तो कोई देवता मेरा शत्रु है, ना परमात्मा मेरा शत्रु है। कभी so कभी there it भगवान is को भी said, लोग गाली देते हैं no Devata is भगवान my को enemy, किया हुआ, Paramatma is not my और enemy. ना कोई Sometimes ग्रह people ग्रह criticize Bhagavan मेरा also शत्रु है, that he has ना done कोई this to me. काल शत्रु है, Planetary ग्रह positions are शत्रु also है। not my enemies. कर्म को भी कहता है कर्म भी मेरा शत्रु Even है, time is not my enemy. Even karma फिर is कहता है not कि my केवल मन ही enemy. शत्रु है, So there it is said that mind is मन the ही only शत्रु है, enemy, no कुछ और नहीं। person, no, nothing क्योंकि else. काल कैसे दुख दे सकता है, काल तो How कोई can व्यक्ति नहीं है, काल तो कोई चेतन पदार्थ नहीं है, how can time है भी inflict चेतन suffering पदार्थ upon you? नहीं है, तो Time वो is कैसे not दुख some दे सकता conscious है। substance तो कहते हैं मनो that will परम give you कारणम suffering. आमनंति, Planet is also मन ही not like मुख्य that. कारण है जिसके कारण Mind is the ये main दुख देता है, reason of our और कोई कारण नहीं। suffering. Mind is what makes us suffer. इसलिए There is भगवान no other कहते हैं reason. कि यही That's शत्रु है। why Bhagavan says mind is the enemy. जो बाहर का शत्रु होता है, जैसे मैंने कहा, उससे तो हम The सावधान हो जाते external हैं, enemy, which और whatever we have, सावधान भी ना we हो become और careful of बाहर का that. शत्रु हमारे लिए समस्याएं खड़ी And करता है, even if we are not careful तो of हम that, suppose वैराग्य the फिर हो some जाता है enemy outside कि ये creates सब problem झूठ है, for us, बेकार है, सब so we can समस्या even है, get सब vairagya, सब परेशानी renunciation. लगाए मेरे पे, Every तो person आप is शायद आध्यात्मिक giving, मार्ग making me अपना सकते suffer. हैं। ऐसा भी So who होता knows, है you may even come on कि the भगवान spiritual कहते हैं path, आर्तो जिज्ञासु अर्थो being जिज्ञासु frustrated by all these ज्ञानी people. च भरतर चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नवार्जुन, कि लोग दुखी होकर So के Bhagavan says भक्ति that मार्ग पर आते people हैं, come to the path of लेकिन bhakti मन तो because they उसको have पता ही नहीं चलेगा कि इसके कारण suffered क्या है। earlier. तो But ये कहते हैं कि ये वास्तव में असली शत्रु है, in case of बाह्य mind, you शत्रु won't नहीं even है। understand why I'm suffering. और अगर बाहर वाला जो शत्रु है, जिसको हम बाहर वाला शत्रु है The उसको external समझना है, तो enemy वो is मन not के कारण actually है, enemy. The external enemy लेकिन whom we आपका मन consider बदल enemy जाए is also due तो to वो the शत्रु mind मित्र only. भी हो सकता है, If your mind changes, that enemy या can become your friend आप also. कहें कि उदासीन हो जाए उसके प्रति कि मेरे को Or you इसको may करना say है जो that करना है, मेरे को कुछ I नहीं। become neutral तो वो towards शत्रु that भी हमारे person. मन में बैठ जाता है, But that enemy जैसे also कंस के मन में भगवान gets कृष्ण बैठ takes गए, uh, becomes seated very शत्रु है deeply in इसको our वध mind. करना है, उसको देखा भी नहीं है। Like regarding Bhagavan Krishna, जिस व्यक्ति Kamsa को कभी always कभी considered देखा भी his नहीं है, enemy and wanted to kill जिससे him. आपका कोई व्यवहार नहीं हुआ, He had never even बर्ताव नहीं seen किया, him. वो भी आपका शत्रु कैसे बन गया? मन के कारण है ना, उनके How मन में वो can बैठ the गया person whom you have never even seen, never कि even मर जाओ, interacted with, मेरी you, हत्या that कर he दो, becomes your enemy? क्योंकि Why? ये मेरी Because it भगवान की was शक्ति told to है, Kamsa that this तो person, उसको शत्रु he मान will लिया, kill you. He उसको will be मन the से ही eighth माना ना, son of this of his mother, and he will kill you. बाद में मरने लगा So Kamsa तो भगवान considered Krishna as enemy in his लेकिन mind पूरा only. जीवन परेशान रहा वो, So and whole life he remained उठते disturbed. बैठते खाते सोते उसको कृष्ण ही दिखाई देता, In every situation, whether sitting or तो sleeping ये मन or ही इसका walking, he always कारण है। used to see Krishna शिशुपाल only जन्म से everywhere. द्वेष करता था, Shishupal, he was envious मन of के Krishna कारण, from childhood तो यही due to his mind. वास्तव में हमारा शत्रु है। So this is actually our तो enemy. इसके कारण हम गलत क्रियाएं करते हैं, मन के कारण, क्योंकि मन में आसक्ति हो जाती है किसी So विषय because में, of mind, we perform the wrong फिर actions. हम अधार्मिक कार्य करते हैं, We get desire, we have for enjoyment, और sense enjoyment, and then we engage तो in इसलिए भगवान कहते irreligious हैं कि activities. हमारा मन ही शत्रु है। That's why Bhagavan says our mind is एवं our एव enemy. बंधुर आत्मा एव रिपुर आत्मन, एव का मतलब होता अन्य योग व्यवच्छेद, कि So दूसरा evakar कोई is used, eva कोई yog, शब्द eva है yog जो means जुड़ anya गया, yoga मतलब vyavachhed. उनका कहने का मतलब है Eva कि is कोई दूसरा used शत्रु meaning है नहीं, केवल आप there ही is हैं। no other enemy other than your ये mind. बहुत बड़ी बात है और So विचार this is a करने वाली very बात है, important सोचने point वाली बात है, worth क्योंकि ऐसा हम deliberating, सोचते नहीं है, कोई introspecting, नहीं सोचता कि मेरा because मन मेरा we don't शत्रु है। think like this. Nobody thinks that his mind is his हमारे मन में enemy. तो हमेशा कोई दूसरा शत्रु बैठा In हुआ our है, mind, always somebody else is our उसी का enemy. विचार चलता रहता है, उसी के सपने आते हैं,
and we keep thinking of that only. We keep dreaming of that भगवान person क्या बता रहे only. हैं यहाँ पर We make plans कि वो to नहीं get है, rid of हे that भगवान only. ऐसा कोई शत्रु But है here ही नहीं। Bhagavan is telling there is no other कोई भी enemy. अपने He is शत्रु नहीं using है, हमारा eva. मन ही हमारा शत्रु We है। are our own enemy. तो Our mind is our इससे enemy. सावधान रहना है आपको। So we have to be careful of this enemy. अगर वो शत्रु है तो उससे If it is सावधान रहना पड़ेगा enemy, ना। then we have to remain वही careful पिछले of that or अध्याय में no? भी कहा ना, जो उन्होंने कामेश Earlier also in the समुद्र third chapter he इंद्रिय गुण explained समुद्र है महासनो महापापमा विद्धि एनम ही है वैरिणम। वैरी बताया ना भगवान ने कि ये जो काम है that this ये kama, हमारा वैरी है, lust, ये हमारा शत्रु है, this is our enemy. बोला ना उन्होंने। और फिर कहा कि जही एनम And then महाबाहो he said काम रूपम दुरासदम, कहते हैं शत्रु को मारो। that you should kill this enemy. तो कहने का मतलब ये है कि वो काम कहाँ रहता है? So the point is, where does this इंद्रियाणि kama मनोबुद्धि reside? मनश्यते। उन्होंने कहा कि ये मन में रहता है। He said that it resides in the बुद्धि mind. कहा, लेकिन इसका मूल केंद्र जो है वो मन है। तो वास्तव में जो He used the word buddhi also, but mind is the main place where this enemy resides. So why mind is my enemy? It is due to kama. का जो चाकू है, तो चाकू आपका लाभ भी कर सकता है, हानि भी कर सकता है। अग्नि है, Like say there is a knife, it can help you or it can cut your finger. Fire can cook food. Fire can burn your home. उंगली भी काट दे। Knife can cut vegetable also. Knife can cut your finger मन also. में अगर प्रोग्राम, Similarly, if the mind is having nice programming, then it is your friend. But if mind has the wrong programming, then mind is your enemy. आसक्ति, संकल्प, So in mind, if we have desires, these material desires, भरी हुई हैं, तो मन शत्रु हो जाएगा। then mind is our enemy. And if mind has the feelings of seva, truthfulness, preeti, then mind is your friend. So actually, शत्रु और मित्र उसमें हमने क्या भरा हुआ है उसके ऊपर निर्भर करता है। mind is our friend or enemy depending on what we feed in the mind. कहीं और It is we ourselves who feed all this in the mind. Nobody else can feed anything in my mind. It is I only who feed डालें और क्या ना my mind. जैसे हम भोजन करते हैं, So it is up to me what I feed the mind. Like when we are eating food, what we are ingesting in it is up to us only. Nobody तो आपके ऊपर है, उसको आप can forcefully feed something in my mouth, and even if somebody does that, it is up to me whether I take it inside or no. कान है, नाक है, जिह्वा है, तो ये सब से जो भी कुछ अंदर So all these senses, whether ear, nose, etc., whatever goes in them, ultimately it goes through the mind only. के साथ Like we have studied in Nyaya, the Vishaya has connection with sense and sense has connection with mind. Then we get knowledge of that object. So everything is connected with the mind. So we have to see that when it becomes connected with the mind, should we become attached to that or no? गलत चीज है तो उसको छोड़ दें। If it is something good, something nice, then we can hold on to it, otherwise we give it up. हमारा पतन हो जाएगा। So if we catch hold of the good things, they will uplift us. And if we catch hold of the wrong aspects, then it will degrade us. अंदर ये So for this we have to use our buddhi. Because in buddhi, there is this consciousness, this vivek, understanding what is good, what is bad. उद्धार होगा, And that is what will uplift us. बन जाएंगे, Then our mind will become our friend. पाएंगे। We will have good sankalpa. तो जैसे वो वेद में कहा है, Like it is said in the Veda, मन में अच्छे संकल्प हों, that there is a prayer for having good desires, good sankalpas in the mind. यही हमारा जीवन चलता है। And our life continues on sankalpa only. ऊपर है, So it is up to जो us. भी कार्य करें So whatever we do, देखें कि इससे मेरे को दुख मिलेगा या we should check whether it will give us happiness or sorrow. तो उसको पकड़ कर बैठना मत बैठिए, क्योंकि उससे पहले देखो कि इस विचार से मेरे को सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। If some thought enters your mind
हम जो भी Don't just hold बोलते on to हैं it. First check it will उससे भी make you देखो happy or make you जो suffer. है दुख मिलेगा। What we speak, we should first of all देखो हम think what I am अपनी going to speak will भाषा give से me happiness or बोलने से ही suffering. दुख पैदा करते हैं। Otherwise, with our speech also दूसरे को we हम कुछ can गलत शब्द बोल inflict देते हैं lot of suffering upon ourselves तो only. उसका प्रभाव If we बाकी सब speak पे something रहेगा। wrong to others, then we will दूसरे have to गाली face देते the हैं reaction. तो उससे लगता है कि हमने कुछ बहुत अच्छा कार्य कर लिया, लेकिन उसका प्रभाव हमारे If ऊपर थोड़ी we आएगा। use bad words for others, we गाली may जब think दूसरों को that we देते have हैं done पहले तो something गाली great, अपने मन में ही आती but है, then we also फिर have वो to suffer for अपने that मन को अशुद्ध because, करती है, first of all, that शुद्ध foul नहीं करती। language was in my mind only. So, I first of all, it is ऐसा I only who एक बात become तुमने भी impure. सुना होगा कि कलयुग में केवल Like you धर्म may ही have कार्य heard करता है, many कुछ नहीं times होता जो people say कार्य that in करते हैं Kali वो Yuga, होता है। अगर आपकी nothing, बात you don't get अच्छा मन में आती है तो reactions उसका फल भी for मिलता है, ऐसा नहीं है, thoughts of हमारा मन papa तो in अशुद्ध mind. होता है ना उससे। So that is ये सोचते not हम तो correct हमेशा because your यही mind सोचते does हैं कि become जो मैं impure कार्य कर रहा हूँ या विचार because या of सोच that. रहा हूँ उससे मेरा So we have शरीर to आनंदित हो, understand that whatever I am तो ये मेरे thinking or ऊपर है। planning, it will make me happy or make me भगवान suffer. बुद्ध एक बार जा रहे थे Bhagavan क्योंकि वो Buddha बहुत was going प्रवचन somewhere, करते थे और जब and प्रवचन because he करेगा used उससे to कुछ give मित्र lot बनेंगे of कुछ शत्रु भी lectures. बनेंगे। बहुत देर Anybody बाद who वो gives lot जो of सन्यासी lecture, होते हैं he will get friends also, काफी लोग enemies also. दुखी भी हुए, उनके जिन माँ बाप जिनके So युवा many young people पुत्र became छोड़कर his सन्यासी हो sannyasi गए, followers, and उनके their सन्यासी parents बने, तो had वो become दुखी भी disturbed. होते थे उनसे, उनको गाली देते थे। तो एक बार वो जा रहे थे, उनके साथ में आनंद चल रहा था, उनका जो So once he was going somewhere, and his brother Anand was accompanying एक him. व्यक्ति आया Some person came और there, वो व्यक्ति आके बुद्ध को गाली देने लगा। तो भगवान बुद्ध एकदम and that शांत हो गए, person started criticizing Buddha. But Buddha was कुछ peaceful. नहीं कहा उन्होंने, He was absolutely peaceful. He did वो not आदमी reply गाली दे के anything. चला गया। The other तो person, आनंद जो he उनके साथ में continued to था abuse Buddha. उनको थोड़ा गुस्सा So आया, Anand, who was with तो उन्होंने Buddha, कहा he भगवान अगर आप became somewhat angry, मेरे को and अनुमति दें he said that तो मैं इसको ठीक कर if दूं, you permit me, then इसकी थोड़ी पूजा कर दूं। I can rectify this person. तो बुद्ध हंसने लगे। But Buddha started laughing. तो आनंद ने पूछा कि आप हंस क्यों रहे हो, ये आदमी गाली दे रहा है और मैं चाहता हूं कि मैं इसका प्रतिरोध करूं, इसको पाठ पढ़ा दूं मैं अभी, This person is और आप abusing. हंस रहे हैं। I want to teach him a उन्होंने lesson, बहुत and अच्छी you are laughing. So Buddha बहुत made a very विचार दिए। nice point, देखो very जो deep point. बुद्ध व्यक्ति होते हैं, Those who are Buddha, उनकी who are विचारधारा कैसी रहती है, so भगवान ने कहा wise, योगारूढ़, how they राग द्वेष think. से ऊपर उठे हुए Those who होते are हैं, उनकी beyond Rag विचारधारा Dvesh, कैसी रहती है। how they think. तो उन्होंने ये कहा So Buddha आनंद said को, बुद्ध to को, Anand कि तुम महाबुद्ध हो। that you are a great fool. सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि तुम महाबुद्ध हो, तो वो चौंक गया, कहता है अरे So Ananda was ऐसा क्यों taken बोल रहे aback that why is he मैं speaking तो इसका like this? प्रतिरोध करना चाहता I हूँ, am गाली देता है। I कहता want है to refute कि ये व्यक्ति or गलती कर defeat रहा the है person who is abusing. और इसकी Buddha said, गलती this पर आप person, अपने what आप he क्यों is सजा doing देते is हैं, wrong, but why do you want to गलती ये punish करता है yourself for his और सजा wrong क्यों दे रहे हो actions? अपने आप को। He is doing the wrong action तो and बोलता है कोई you सजा are नहीं है आपकी बात giving में, punishment to कहता yourself. गाली ये आदमी So दे रहा है, So he said he क्रोध didn't तुम कर रहे understand, हो, but Buddha explained that जब he तुम is क्रोध कर रहे हो तो तुम abusing अपने आप and को you are सजा दे रहे becoming हो। angry. So when you are becoming और जब angry, तुम क्रोध you करते हो are तो actually तुम्हारे शरीर में punishing yourself. कितने विकार पैदा होते हैं, When you become angry, your body तुम क्यों अपने आप को सजा दे रहे हो, generates so much of ये vikar. मूर्खता है। So why are you अरे punishing गाली देने yourself? देने दे This तो is दो, एक के foolishness. बाद एक कितनी If he गाली is देगा, abusing me, fine, let या him तो कुछ abuse. बोल देगा तो How long can गाली he देता continue रहेगा, abusing? चला जाएगा। He will leave हमने this सुन लिया, place. Fine, we ये heard. पहले पूर्व जन्म में कुछ इसका किया होगा इसलिए गाली दे रहा है बेचारा, Maybe I must have done something wrong in my अपना previous बदला life. लेगा। That's why he is taking तो ये revenge कितनी by विचारणीय बात है by abusing और me. शिक्षाप्रद बात है, So what क्योंकि Buddha हम said is so इस प्रकार important के and has so much lesson for देश-विदेश में us. पड़े रहते हैं, किसी न We किसी always remain संगति हमारा implicated बना in रहता this. है। Somebody told me something and then ये whole भी day I मेरी बात remain है, disturbed. Not even day, even रात में night. नींद भी नहीं आएगी कि उसने ऐसा क्या I कह can't दिया, even इसलिए sleep मैं at ये ऐसा night. करूंगा, Why इसलिए he मैं or ऐसा she करूंगा। said like this, I will do कहता है this to क्यों him or बोलता है, her. कोई आवाज कान में आई,
So Buddha said, he spoke something, some sound entered my ear. Now why are you holding on to that? लेना देना नहीं है, I have no business with this person. There may be some लेकिन इसको तो ऐसे connection with लगता है previous life, तो ये अपनी प्रतिक्रिया दिखा के चला जाएगा। but if he feels like this, he is reacting to me, and if I also start reacting, पिंग पोंग then this our karma connection will again continue. तरफ बॉल फेंकेगा, It will be like a tennis game. He will throw ball at me, then I will throw back at him, and in this way we will get implicated in bondage of karma. मैंने इसका कर्म जो है वो समाप्त कर दिया, मैं इस कर्म So I have finished this karma. I do not want to continue this cycle of karma anymore. तो इस तरह से हम अपने मन को अगर नियंत्रण में रखें तो In this way, if we keep our mind under control, then our life will be peaceful. करते हैं, Because in our life, we do not act, we just react. क्रिया भी करते हैं, We do act in the sense, but that is very less. But mostly we only react. तो हम अपने मन को शत्रु ना बनाएं, So we should not make the mind as enemy, rather we should make it our friend. And this is only in our hands, and we only have to do this. पीछे कोई दवा नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है There is no medicine कि आप for this. ब्लिस You cannot eat some tablet called bliss and then you dance in Ananda. That is not going to happen. तो क्योंकि जो भी आप कर्म करेंगे उसका परिणाम So whatever karma you will do, you will have to face the reaction. इसको कोई रोक नहीं सकता। Nobody can तो हम जो भी stop that. करते हैं Whatever karma we do, उस कर्म का फल जो है वो आएगा, we will face the reaction. जिससे मेरा उद्धार हो, So we can do that type of karma which can uplift ourselves दूसरे को भी सुख मिले। हम ऐसा भी and कर्म कर सकते हैं give happiness to others also. दूसरे को दुख मिले, We can do karma which gives us happiness and gives suffering to others. ना दुख मिले। And we can do karma which can give us happiness but has no reaction on anybody else. ऐसा भी कर्म कर सकते हैं कि मेरे को दुख मिले We can do reaction which can give us happiness and others suffering, or gives us suffering and gives suffering to others, or gives us suffering but does nothing to others. So we have to check कर्म करना which karma is of maximum benefit to us. Do I want to do such karma that gives us suffering and others also, and suffering to others also? उससे हम खुद भी So mostly our actions give suffering to ourselves also and to others also. को ना दुखी करें, But हम स्वयं सुखी रहें। at least we should do karma which gives us happiness and has no reaction on others, and at least not give suffering to others. अपना भलाई स्वयं में कर सकते हैं, और दूसरे की बुराई अगर हम करेंगे, दूसरे को हम दुख देंगे, So we can benefit ourselves, and if we are inflicting suffering upon others, then we are sowing the seeds of suffering for ourselves only. ये आत्मा ही आपका बंधु। For that Bhagavan says बंधु क्यों है that आत्मा? क्योंकि ये आपको भवबंधन से मुक्त करा सकता this is your mind is your friend, your enemy. है। आत्मा ही बंधु है और दूसरे बंधु नहीं है कि आत्मा ही आत्मनो बंधु। दो बार भगवान ने एव का प्रयोग किया है। Bhagavan has used the word twice, telling your mind is the only friend, क्या हुआ कि दूसरे बंधु your mind is your only friend, your mind is your only enemy. क्योंकि वो तो बंधन में डालते हैं। Others are not your friends. Why? Because they implicate you in bondage. बंधु कहते हैं, वो आपको बंधन Those whom you say that you are मन जो है they are your friend, they are not your friends. They just implicate you in bondage. Rather, your mind can release you from bondage. ये असली बंधु हमारा मन ही हो सकता है, Your actual अगर हम friend is your mind only, if you use it wisely. समाज में व्यवहार के लिए सब बंधु हैं, मित्र हैं, चलता है, करना पड़ेगा, लेकिन अंदर समझ के रखिए उसको। In the society for practical dealings, okay, you can understand this is friend, this is enemy, but internally we have to understand this, what Bhagavan is teaching, who is our friend, who is our enemy. वो बताते हैं कि कैसे
एक ही मन Then in the दो next मित्र verse, कैसे हो सकता है? Bhagavan explains how उसकी क्या one प्रक्रिया thing है? can be friend हम also, शत्रु है enemy मित्र भी है also. आपने कहा, तो शत्रु कब है मित्र कब है? क्या दोनों एक साथ है क्या? या अलग अलग समय पे है? सुबह में शत्रु है, शाम को मित्र है, क्या ऐसा है क्या? How does that work? तो उसके लिए भगवान Morning कहते हैं is it friend, evening is it बंधुरात्मनस्तस्य enemy? येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने बुद्धि से अपने मन को जीत लिया है, The mind is a friend विशेष रूप specifically से to उसके that लिए self by बंधु है, whom the mind is परंतु conquered जिसका by मन वैसा intelligence. नहीं है, उसका But for मन a शत्रु की person तरह whose व्यवहार mind is करता है। not under the control of the self, his mind itself behaves adversely like an enemy. शत्रु और मित्र कब है, किस स्थिति में है? So, when is तो this mind friend? जब When is आपका it मन enemy? In what आपके situation is नियंत्रण it में friend है, or enemy? So, Bhagavan is नियंत्रण explaining में है, when mind is in your control through your आत्मना intelligence. बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जिता। तो वो मन जो है फिर हमारा मित्र हो जाएगा। हम इस दुनिया में बहुत चीजों को जीतने का प्रयास करते हैं, दूसरों को जीतना चाहते हैं। In this पहले लोग world, बड़े बड़े we want राजा to win over so many चक्रवर्ती संसार कहलाते थे, people. Earlier, there were great संसार kings को जीते who थे। were uh, लेकिन जब तक आपने big अपने आप को conquerors. नहीं जीता, But unless you have तो आपने conquered your किसी own को नहीं mind, जीता। you have not conquered हिंदी over में anything. कहावत है, मन जीते जग जीत। कि In अगर आपने Hindi, मन there को is a जीत लिया proverb which तो means आपने that संसार if को you जीत have लिया। conquered your mind, you have conquered over the whole world. तो जब अलेक्जेंडर भारत में आया था, When Alexander had arrived in तो गुरु ने India, कहा था कि वहाँ किसी then योगी से मिलना। his teacher मैंने had सुना said है that there कि you भारत meet में some बहुत बड़े yogi. योगी हैं, He had तो heard अगर that in India अच्छे there are योगी many मिल जाए तो उसको yogis, लेके आना, and क्योंकि if हम तो वहाँ you घूमना get चाहते a हैं, लेकिन great yogi, योगी को देखना then you है। bring him here because we तो cannot go अलेक्जेंडर there. ने अपने मंत्री को भेजा कि किसी योगी को ढूंढो। So Alexander sent तो उन्होंने a पता लगाया, minister to find a तो एक yogi, योगी मिला, गांव में बैठा हुआ था, and पेड़ he के नीचे। found a yogi in the उसके village मंत्री ने कहा कि sitting आप तो under a सम्राट को tree, बुलाते हैं। and then उन्होंने कौन he सम्राट? said that the king has called सम्राट for कहाँ से you. आ गया? The yogi said, which तो king? अलेक्जेंडर कि कहाँ से है, कि वहां से So आया है। it was said अरे the वो तो king भिखारी है। Alexander. So the yogi said, what उसको Alexander, बड़ा that गुस्सा king? हो He is गया, a हमारे beggar. सम्राट को भिखारी So क्यों the कहते हैं? minister देखो was सम्राट angry. How कौन can है, you address our king as वो कहाँ का है। beggar? So the yogi said, I am the king. How can तो he भी be the जाएंगे, अगर king? उनको इच्छा है तो So I बुला will के not लाना। go. If he wants, he can come here to उसको meet बड़ा me. आश्चर्य हुआ कि इसके पास में So the कुछ नहीं है, minister पेड़ के said, नीचे बैठा हुआ है, minister लेकिन was सम्राट को surprised बुला that रहा this person has nothing. है। He और is just तुम्हारा sitting under a tree अलेक्जेंडर and he महान, says, I is a king. ग्रेट And जिसको our कहते हैं, Alexander the और Great. उसको ही भिखारी बोल रहा है। तो उन्होंने This जाके yogi is बोला telling Alexander अलेक्जेंडर is को a कि महाराज beggar. ये तो बड़ी So आश्चर्य की when बात है, Alexander heard कौन है this, he ऐसा was व्यक्ति also और जिसमें इसकी surprised. हिम्मत कैसे हुई Who आपसे is ये this सब कहने की, person देखना and चाहता how हूँ। could he dare to speak तो like वो भी this? देखने के लिए गया। Alexander was curious तो to उनकी meet this बातचीत yogi. हुई, So उन्होंने then बोला कि Alexander क्या went दिखाया, there कैसे and then दिखाया, he तलवार निकाली। तो conversed वो शांत with से that बैठा रहा। person. कहता तुम He काहे took बात पे out his चिल्ला रहे हो, sword and तुम्हारा अपने the मन के yogi ऊपर was sitting नियंत्रण नहीं है, तुम जरा peacefully सी बात पे and the क्रोधित yogi हो said गए that हो, what type of a king are you? You don't तुम have काहे any चिल्ला रहे control हो, over your mind. और You are तुम becoming तो भिखारी disturbed हो, over इतनी such दूर a से यहाँ तक trivial आए हो, point. And you are a beggar. You और have तुम सम्राट हो traveled तो बात नहीं रख रहे हो, from such बोलना a तो long चाहिए। distance. तुम If you यहाँ would have बैठे been हो a king, ऐसे you would have लड़ाई been करते हो, sitting तो बोलो inside कि मैं your समझा तुम्हारी palace. बहुत आकांक्षा है, तुम तो बोलो You मत, are hungry for और हमें देखो हम victory. पेड़ के You नीचे are बैठे roaming हैं, around defeating सम्राट तुम everybody. हो या But हम see, हैं। I am sitting so peacefully, तो nicely under अलेक्जेंडर a की बात tree, समझ में आई। without any anxiety. तो कहने So का मतलब है Alexander कि अगर मैंने understood the अपने मन point. को नहीं जीता है The तो मैं point is भिखारी that हूँ, if I have not conquered क्योंकि my मेरा mind, I मन am a कुछ ना beggar कुछ इच्छाएं पैदा करता because रहता my है, mind will keep और भिखारी का मतलब जिसकी इच्छा है तो giving भिखारी rise है, to वो तो some वही भिखारी है desires. ना जो मांगना चाहता नहीं तो And what do वही you mean by a beggar? तो Beggar मन means जो he है वो has some मांगता रहेगा desire and he begs for something. तो भिखारी बना रहेगा। So mind will always keep begging for तो something. इसलिए It will भगवान remain a कहते हैं कि beggar. जिसने अपने That's मन को why जीत Bhagavan लिया says that one who has वही conquered मेरा over मित्र his है, mind, उसी के लिए वो मन वास्तव में उसका मित्र है। क्योंकि अब वो for भिखारी him नहीं है, only his mind उसको ये is नहीं भगाएगा कि friend. तुम वहां चलो यहाँ चलो। तो मनुष्य कहाँ कहाँ भागता रहता है So human उनकी being आकांक्षाओं keeps को running लेके, around here and there.
और वो कभी पूरी होती नहीं है, but his desires are never fulfilled. क्योंकि मन का स्वभाव ही है नई नई इच्छाएं पैदा करना। Because इच्छाएं it is फैलाते the रहेगा, nature of इच्छा the पूरी mind होने की मशीन to keep giving rise to some desire or the other. So mind is a machine बाद एक के बाद that gives rise to desires one after the other. अंत करना There है is no end to that. बुद्धि से नियंत्रण करना। So तो putting इसलिए a जब stop तक to हम that अपने is मन को possible अपने वश only में by नहीं using करेंगे, intelligence. So unless we control our वो mind, हमारा शत्रु बना रहेगा। it will remain our जितनी enemy. भी वस्तुओं को हम प्राप्त करना चाहते हैं Whatever we सुख want के to लिए, acquire in our हम उतना life ही उनके पराधीन for हो जाते हैं। Vishaya Bhog, हम सोचते ऐसा है we become subservient to that. We विजय think प्राप्त कर ली। that we have won over this. आधुनिक जो विज्ञान है वो कहता है कि हमने प्रकृति Like को this modern science, it says that लेकिन प्रकृति को we जीता have नहीं है, conquered the प्रकृति के और ज्यादा material वश में आकर nature, but actually you तो have हम come अब उसमें more and ध्यान more नहीं under करते the control of material कि nature, अगर because बिजली now ना you आई depend so much on that. For example, अगर एक now महीना बिजली suppose नहीं you आई don't have electricity तो for संसार 1 ठप month, हो जाएगा। then the whole world लाइट will नहीं come आएगी, to a आपके halt. बैंक काम नहीं There will करेंगे, be no flight, आपकी bank गाड़ी will नहीं not चलेगी। work, your car will not move. तो हम बिजली को नियंत्रित कर रहे हैं या बिजली से नियंत्रित हो रहे हैं? So, are we controlling electricity or are we जिस चीज being का भी हम controlled by उपयोग करते electricity? हैं हम उसके अधीन So, हो जाते whatever we use, हैं। तो जितनी we हमारी come under इच्छाएं its बढ़ेंगी control. और जितनी हम अपनी इच्छाओं को बढ़ाते जाएंगे उतना ही The हम more उनके we अधीन have होते जाएंगे desires, the more we और keep हम बढ़िया increasing से our जीते नहीं desires, रहेंगे। we will become subservient to those desires. स्वतंत्रता कहाँ पर है? We want to become free, but where is the तो अगर freedom? हमको स्वतंत्र होना है So, if we तो want हमको to become विषय free, भोग में आसक्ति त्यागनी पड़ेगी then we have to give up और जब तक हम attachment आसक्ति नहीं त्यागते to this Vishaya Bhog. तक ये चलता रहेगा और हम उसी बंधन में So, पड़ते unless रहेंगे और we हम give उसी up मन की attachment, इच्छाओं को पूर्ति this करने के लिए bondage will दौड़ते रहेंगे। continue, and we will keep running here and there for दूसरों fulfilling को भी our हम जीतना material चाहते हैं, desires. हम वस्तुओं पर So, ही केवल अपना आधिपत्य नहीं जमाते, हम we व्यक्तियों पर भी आधिपत्य we जमाना don't चाहते हैं। want to control only ये this मेरी बात material मानिए, nature, but we also want to ये control चाहते other हैं human कि beings. मेरी We पत्नी want या that पति जो others भी है वो मेरे should अनुसार काम be करे। subservient to us, they should obey us, they तो should be under ये our कभी होने control. वाला नहीं है क्योंकि उनका अपने Now, मन that में is इतना never नहीं going to happen because their own mind is तो not वो under आपके their वश में कैसे control. रहेंगे? It is their mind is not under their control only, so how can it be under your control? तो अगर मेरे को आपके लिए कार्य करना है So if I have to work for you, मेरा मन मेरे वश में होगा तभी तो कर सकता then हूँ। my mind should be under my control only, then I can work for you. तो मैं दूसरों की सेवा If कैसे my करूँ? mind is not under control, how can I do seva for somebody else? तो दूसरों पर आधिपत्य कभी संभव ही नहीं है क्योंकि उनका मन उनके So it is never possible to control anybody else because the other person's mind is also not in his control. आधिपत्य जमाना है वश में करना If I want to rule over others, that is, or control others, that is only possible through love. Bhagavan, who is the supreme independent person, से he also स्वतंत्र हो जाते हैं। becomes subservient out of love. लेकिन हम दूसरों को अपने But शक्ति से बल we want to control others by our force, by power, but that never अगर works. हमको दूसरों को भी अपने अधीन में करना है तो वो केवल So if we want to control others, that is है कि हमको उनकी सेवा also possible only through love, and that means that we should do their seva, not that we take seva from others. दूसरों की सेवा करेंगे तो हमको If we do seva to, if we do seva for others, then our mind should be under our control. So ultimately it all this boils down to controlling the mind. That's why Sri Chaitanya Mahaprabhu says that prema is the topmost purushartha, क्योंकि जो सबसे महास्वतंत्र व्यक्ति है because the supreme person also comes under the control of prema, आपका मन जो है वो स्वतः ही नियंत्रित हो जाता है।
And in that stage, your mind is automatically under इसलिए control. भगवान कहते हैं कि मन ही आपका That's why Bhagavan मन says ही आपका बंधु। that mind is तो इसके लिए बहुत your only friend एक and अच्छी mind is श्लोक your भी है, only enemy. So there is a जो विष्णु famous पुराण में verse आता है, for this. विष्णु पुराण में आता है, It मन appears in एव Upanishad and Puran also. कारणम बंध मोक्षय बंधाय विषयाशक्तिम मुक्त्यै निर्विषयम स्मृता। कि मन ही मनुष्य का There he says that mind is the cause of bondage and mind is जो the विषय में cause आसक्त of मन है वो बंधन का कारण है, liberation. और जो विषय में आसक्त नहीं है So one who is attached to और जो sense हमारे मोक्ष objects, का कारण है वही हमारा his mind is cause of bondage. One बंधन का who कारण is है, वो detached, शत्रु है, his क्योंकि mind is बंधन cause कोई of भी नहीं liberation. चाहता। एक ही बंधन चाहते हैं, Nobody वो wants प्रेम bondage. The only bondage that is worth desiring, प्रेम that में जो is मुक्ति the bondage मिलती है, of प्रेम में prema. तो स्वतंत्रता आती है, In prema, प्रेम में there is बंधन नहीं freedom. होता वास्तव में। In prema, there is actually no bondage. तो हालांकि यहाँ पर Although प्रेम here, का प्रकरण नहीं चल रहा है, the प्रकरण तो context योग is का not है, about prema, the context is about yoga. भगवान But उसमें भी बता रहे हैं कि वास्तव में in that also, Bhagavan is telling that actually स्वतंत्रता है the वो प्रेम से real ही मिलती है, क्योंकि freedom उसमें मन is possible only by नियंत्रण prema, रहता है। because in जब the तक stage of मन prema, your नियंत्रण mind में is है, fully तब under तक control. शत्रु बना And रहेगा। unless your mind is शत्रुत्व in है, control, वर्तते it will भाव। remain your enemy. शत्रुत्व माने शत्रु भाव, यानी कि उस मन का भाव जो है The bhava of the शत्रुत्व mind रहेगा। will be of an enemy. तो बहुत महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग भगवान ने किया है कि Bhagavan has used शत्रुत्व very important word. दो बार क्यों प्रयोग किया? Why did he वो use इसलिए the किया word है कि कोई शत्रु होता है twice? Because तो उसका भी भाव हमेशा शत्रु भाव तो if नहीं there रहता, is वो an शासन सेवा enemy, भी करता है अपने जीवन में, ऐसा तो नहीं he's कि वो आपके all शत्रु the बना ही time पड़ा हुआ है। not your enemy. उसको He is काम doing ही many है, other things also in his कोई life. ऐसा शत्रु नहीं It is है not that आपका he doesn't have any other work. कि वो 24 घंटे केवल शत्रुता में ही है, It is not that 24 hours होगा तो he उसका is अपना जीवन busy नहीं चलेगा। being your लेकिन enemy मन only. जो Otherwise, है how वो will he हमेशा sustain his शत्रु own है, life? वो But for क्या mind, करेगा? शत्रु Bhagavan is telling ये तो 24 घंटे आपका शत्रु ही बना रहेगा, उसका that और कुछ this काम नहीं mind है। is your enemy 24 hours. This mind has no other work. तो इससे बड़ा शत्रु और कौन होगा? So who can be a bigger enemy than इसलिए ये this? बड़ा महत्वपूर्ण That is why शब्द का this प्रयोग is a किया very है, शत्रुत्व important word that Bhagavan एक used आपका here. शत्रु है। तो ये दो श्लोक बहुत प्रायोगिक श्लोक हैं अपने जीवन में उतारने के लिए। So these two verses are very practical for our life, for uplifting ourselves, उठाने के लिए for rising above the प्रकार से problems, जीवन में शांत रह सकते हैं, how we can remain peaceful in life दूसरों को भी शांति दे and bring peace in others' lives तब also. आप देखेंगे कि आपका जीवन Then you will see that your life समृद्धि से भरा रहेगा। is full of happiness, ananda, अच्छी भगवान prosperity. दी है, So this is a wonderful lesson हमको by समझ Bhagavan, लेना चाहिए। and we should try to apply it in our life. प्रवचन यही So we'll stop here सिर्फ for कुछ today, प्रश्न and शब्द पूछ। if you have any question, you can ask. प्रार्थना श्लोक कोई प्रश्न नहीं है तो सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे
शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं हरि ओम तत्सत्।